Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start next part of the lecture 1, that is building a network. So we see key requirement for computer networks, that is efficiency. As we discussed before, packet switching and circuit switching in detail, and we discussed the drawbacks and advantages of the packet switching and circuit switching. So when we are talking about the efficiency for computer networks, so we will see that packet switching is the best choice for efficiency. And when a node connected it can send message to any other node at network. But what happen if all nodes want to exchange message at same time? So for this purpose we will prefer multiplexing technique. Next is protocol layers. As we know that networks are complex, it consists of many pieces or devices like host, routers, links of various media, different applications, and protocols to run that applications, and hardware and software. But the question is that, is there any way of organizing network architecture? Yes, it's possible with a layered architecture. That's why we will study OSI model layer and TCP IP model in the next slides. नेक्स्ट हम OSI मॉडल लेयर्स पे जाने से पहले अगर हम लेयर्ड की फिनोमिना को वन बाय वन एक एग्जांपल से देखें कि लेयर्ड स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, तो हमारे पास एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर ट्रैवल. जब हम कोई भी एयर ट्रैवल की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है कि हम टिकट परचेज़ करेंगे. टिकट परचेज़ करने के बाद हमारा सामान जो है वो चेक होगा, देन सामान की लोडिंग होगी ऑन द गेट. उसके बाद आपका जो भी एयरप्लेन है वो टेक ऑफ करेगा. एयरप्लेन राउटिंग के बाद अदर साइड पे जाके तो लैंडिंग, देन आपका सामान अनलोड होगा, आप अपना सामान क्लेम करेंगे. उसके बाद अगर आपको पूरे ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी किस्म की कोई कंप्लेन है वो आप टिकट काउंटर पे जाके उसको भी रजिस्टर करवा सकते हैं. सो ये आपका एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं वन बाय वन आफ्टर वन एंड अदर. ऐसे नहीं हो सकता कि पहले जो है वो आप सामान को लोड करेंगे और फिर आप टिकट परचेज़ करेंगे, या आप ऐसे नहीं हो सकता कि पहले आप लैंड नहीं हुए और आपने जाके अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करवा दी है. सो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो हैं ये परफॉर्म होते हैं वन आफ्टर एंड अदर. इसी तरह जब हम OSI मॉडल की बात करते हैं तो जो हमारा लेयर्ड फिनोमिना है वो हर लेयर अपना काम परफॉर्म करती है. अपना काम परफॉर्म करने के बाद जो डाटा उसके पास होगा वो नेक्स्ट उसको ट्रांसफ़र कर देगी. सो ईच लेयर इम्प्लीमेंट्स अ सर्विस अपना वाया इट्स ओन इंटरनल लेयर एक्शन, यानी कि जो उस लेयर का फिनोमिना है, जो उसका काम है, वो अपना काम परफॉर्म करेगी. अपना काम परफॉर्म करने के बाद जो डाटा है वो अपने जो भी उसे नेक्स्ट लेयर है उसको सेंड कर देगी. सो कंबाइंड विद द सर्विसेज डायरेक्टली बिलो इट. नेक्स्ट इज़ वाई लेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डील कर रहे होते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि हम जिस भी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. उसके लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के स्पेसिफिक पार्ट्स को हम ईजीली डिस्कस कर सकें. लाइक अगर हम कोई भी चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं और हम चेंजेस या वो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हम किसी भी एक लेयर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी सारे सिस्टम के लिए वो ऑपरेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो चेंज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. उससे कोई भी और चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए. अगर हम किसी भी एक चीज़ को सिस्टम की अपडेट कर रहे हैं तो वो अपडेट जो सिस्टम हो रहा है वो उसकी बाकी लेयर्स को या बाकी पार्ट्स को इफ़ेक्ट ना कर रहा हो. जैसे कि अगर हम एग्जांपल, हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी, अगर हम उसको देखें गेट प्रोसीजर, अगर हम उसमें कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं तो वो आपके बाकी सारे सिस्टम को, जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम है, उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी. आपने लैंडिंग हो रही है आपकी, आप टेक ऑफ कर रहे हैं, आप सामान को लोड कर रहे हैं, ये सारी आपके पास जो वर्किंग है ये इंडिविजुअल टास्क है सबका, कोई एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डाल रही. अगर हम किसी भी एक प्रोसीजर को चेंज करेंगे इट डज़ नॉट इफ़ेक्ट रेस्ट ऑफ द सिस्टम. सो इसलिए हम लेयर्स पे को प्रेफर करते हैं कि लेयर्स, क्योंकि हर लेयर अपना काम परफॉर्म करती है, तो अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज करेंगे उस लेयर की तो वो चेंज सिर्फ उस लेयर तक ही रहनी चाहिए. बाकी सारे सिस्टम के लिए वो चेंज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. Now our next slide is OSI model. OSI stands for Open System Interconnection Model.
OSI model defines and is used to understand how data is transferred from one computer to another in a computer network. In the most basic form, we can say that two computers connected to each other with LAN cables and connectors by sharing data with help of NICs, network interface cards, forms a network. But what happens if one computer is based on Microsoft Windows and the other computer has installed some Mac OS? So how these two computers are going to communicate with each other? In order to accomplish successful communication or connection between computers that are on different like Microsoft Windows and Mac OS, so to accomplish successful communication between computers, networks or different architectures, 7 layers of OSI model was introduced by International Organization for Standardization in 1984. This is also called by ISO. This OSI model contained OSI, Open System Interconnect, is a layer model. Each layer performs a subset of the required communication functions, but each layer relies on the next lower layer to perform more accurate functions, and each layer provides services to the next higher layer. But as we discussed before, the changes in one layer should not require changes in other layers. अब यहाँ पे देखिए आपके पास सेंडिंग कंप्यूटर साइज़ है, ये रिसीविंग कंप्यूटर साइड है. लेयर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सेंडिंग साइड पे हम लेयर 7 से 1 की तरफ मूव करेंगे और रिसीविंग साइड से हम लेयर 1 से लेयर 7 की तरफ जाते हैं. लेयर 7 आपके पास एप्लीकेशन लेयर है. कोई भी डाटा जो भी हमने सेंड करना है, कंप्यूटर ने सेंड करना है किसी दूसरे कंप्यूटर को कहीं से दूसरे नेटवर्क पे, तो सबसे पहले जो डाटा एप्लीकेशन लेयर के हैंड ओवर किया जाता है. एप्लीकेशन लेयर उस डाटा के ऊपर अपना फिनोमिना, अपनी वर्किंग, अपने प्रोटोकॉल्स, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद वो डाटा जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर को हैंड ओवर कर देगी. इस तरह सो ऑन. उसके बाद हमारे पास जब लेयर 1 आ जाती है, लेयर 1 आपका डाटा को फिज़िकल नेटवर्क पे सेंड करते हैं रिसीविंग साइड पे. उसी तरह हम डाटा को रिसीव करते हैं लेयर 1 से, और उस डाटा को पे जो भी हेडर और ट्रेलर्स हमने लगाए हुए होते हैं उनको हम अनपैक करते जाएंगे, और एट द एंड हम एप्लीकेशन लेयर से अपना डाटा जो है रिसीविंग कंप्यूटर के हैंड ओवर कर देंगे. अब यहाँ इस स्लाइड में देखें आउटगोइंग PDU कंस्ट्रक्शन. PDU स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स. यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का डाटा है, उसके साथ हमने हेडर लगा दिया. हेडर हमारे पास होती हैं बेसिकली कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन. हेडर एंड ट्रेलर्स के अंदर हम डालते हैं कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन. एप्लीकेशन लेयर ने अपने डाटा के साथ एक हेडर अटैच कर दिया और उसने नेक्स्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को हैंड ओवर कर दिया. अब ये वाला जो पूरा डाटा था ये एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर तक जब गया, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का डाटा हो गया प्रोटोकॉल डाटा यूनिट. इसके साथ प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना हेडर अटैच कर दिया. अब ये पूरा जो है ये आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर सेंड करेगी सेशन लेयर को. वो सेशन लेयर का प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ये P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, की प्रेजेंटेशन लेयर से आ रहा है. सेशन लेयर ने उसके साथ अपना हेडर लगा दिया. सो ऑन. ये हेडर आपका नीचे जाके सेशन लेयर से जो आया है PDU प्रोटोकॉल डाटा यूनिट हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर से अपना हेडर लगा देगी. सो ऑन. ये आपके पास फिजिकल लेयर तक कंटिन्यू रहेगा. उसके बाद ये डाटा जो है हमने फिजिकल नेटवर्क पे सेंड किया. फिजिकल नेटवर्क पे जब वो रिसीविंग साइड पे रिसीव हो गया तो क्या होगा, जिस तरह हमने हेडर्स अटैच किए थे लेयर वाइज, उसी तरह हम लेयर्स वाइज यहाँ से हेडर को रिमूव करते जाएंगे. डाटा लिंक लेयर के पास जब डाटा गया उसने उसका हेडर और ट्रेलर को रिमूव कर दिया. फिर जब आपका डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के नेटवर्क लेयर के पास गया उसने अपना हेडर रिमूव कर लिया. जब आपका डाटा सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर के पास गया तो उसने उसका अपना हेडर जो है वो रिमूव किया. सो ऑन से सब अपने हेडर को रिमूव करते जा रहे हैं. एट द एंड जो आपको डाटा रिसीव हुआ है वो वही डाटा रिसीव होगा जो आपने यहाँ से सेंड किया था. अच्छा, इस स्लाइड में भी आपको वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि डाटा है जब हम सेंडिंग साइड पे बात कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर 7 लेयर से 1 लेयर की तरफ मूव कर रहे हैं. हर लेयर जो है डाटा के साथ अपना हेडर और ट्रेलर अटैच करती जा रही है, जो कि बेसिकली हमारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ हेडर एंड ट्रेलर्स.
जब हम लेयर 1 पे जाते हैं, लेयर 1 के बाद हम डाटा को फिजिकल नेटवर्क पे ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद जब डाटा हमें रिसीविंग साइड पे रिसीव होगा तो हम फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ मूव करेंगे और हम वन बाय वन हर लेयर का की जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है जो इन द फॉर्म ऑफ हेडर एंड ट्रेलर्स होती है हम उसको रिमूव करते जाएंगे और एट द एंड जो हमें रिसीवर पे डाटा रिसीव होगा वो हमें वही डाटा रिसीव होगा जो हमने सेंडिंग साइड से सेंड किया था। अब हम वन बाय वन इनकी वर्किंग देखते हैं कि हर लेयर की वर्किंग क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर is a type of layer which consists of application layer protocol which allows network applications. Network application means those application which uses internet to work correctly in network. Like for file transfer, FTP protocol is used. For web surfing, HTTP hypertext transfer protocol and hypertext transfer protocol secure HTTPS is used. For email purpose we will use SMTP simple mail transfer protocol and for virtual terminals telecommunication network is used. These are the different protocols that we are using on application layer. Application layer protocol is distributed over multiple end system and the package of information or data that we are sending at the application layer that is called. Next layer is presentation layer. Presentation layer receives data from application layer. Those are in the form of characters and numbers, and presentation layer convert those characters and numbers to machine understandable binary format. So the function of presentation layer is this function of presentation layer is called translation. Function of converting characters and numbers into machine understandable language. This function and this phenomena is called translation. Now next is before data is transmitted, presentation layer reduce the number of bits that are used to represent the original data. This bit reduction process is called data compression. It can be lossy or lossless. Data compression reduces the amount of space used to store the original file. As the size of file reduced, it can be received at destination in very less time. That means data transmission can be done faster after data compression. So data compression is very helpful in real-time video and audio streaming. But to maintain the integrity of data before transmission, data is also encrypted. Encryption enhances the security of data. Like if we are sending any sensitive data, so we need to secure the data. So for this purpose we are using encryption. Encryption enhances the security of sensitive data, and at sender side data is encrypted, and on the other side, like at the receiver side, data is decrypted. SSL, secure sockets layer, is used in presentation layer for data encryption and decryption. Thus presentation layer performs three types of functions: translation, data compression and encryption. To convert numbers and characters in ASCII form is called translation, and to reduce number of bits that to represent the original data, that is called compression, and to secure the data we are using encryption with the help of SSL, secure sockets layer, in presentation layers. After presentation layer, next one is session layer. Session layer helps in setting up and managing connections, enabling sending and receiving of data, followed by terminations of connections or sessions. Session layers has its own helpers called APIs, application program interfaces. NetBIOS, network basic input output system, is an example of APIs which allows application on different computer to communicate with each other. Just before a session or connection is established with a server performs a function that is called authentication. Now what is authentication? It is a process of verifying who you are. To authentication, server uses username and password. Once you enter username and password, and your entered username and password are matched, a session and connection are established between your computer and a server. After authentication, next step will be authorization. Authorization is
process used by server to determine if you have permission to accessify or not. So after authentication, authorization is checked. If not, then you will get message you are not authorized to access this page. So a session layer keeps the track of files that are being downloaded. For example, a web page contains different type of text, images, and many other things. These texts and images are stored as separate file on the web server. When you request a website in a web browser, your web browser open a separate session to the web server to download each of the text file and image separately. These files are received in the form of data packets. So session layer purpose is to help in session management. Session layer helps in authorization and authentication to use